Hello students, welcome to Sun Infotech Solution. Today we are going to start our second session, that is how to write a Java program in BlueJ. BlueJ is a user interface through which you can write your program, compile your program, debug your program and execute your program or run your program. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम कैसे अपना BlueJ में प्रोग्राम को टाइप करना है, एग्जीक्यूट करना है और रन करना है. So let's start how to do it. Now at this point we will see how to run this practically on BlueJ. BlueJ एक यूज़र इंटरफेस है जिसके थ्रू आप जावा के प्रोग्राम्स कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं. अगर आपको कोई प्रोग्राम BlueJ में बनाना है तो सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लीजिए और वहाँ पे ये न्यू क्लास पे डबल क्लिक करिए. Then give the name of the class. Suppose we have given the name of the class as hello and then say OK. So this class is generated और एक प्री डिफाइंड कोड इसमें ऑलरेडी जनरेट हो चुका होगा. इसको डबल क्लिक करिए. यू कैन सी दिस सैम्पल कोड इज ऑलरेडी created for you, but I don't require this sample code because we want to write our program from the very scratch. So I have removed all the code and then you have to write this code: class hello, public static void main, system.out.println hello world and this. Now here I would like to explain that what is this class. After class you have to give the name of the class. कोई भी आप नाम यहाँ दे सकते हैं. We have given hello and then there is a method which is known as main method. Main method is very much required because from the main method your program's execution starts. So this public static void main is a method and here we have not given any arguments, and in this we have written a statement system.out.println hello world. System.out.println is a statement और डबल कोट्स के अंदर आप जो कुछ भी देखते हैं इसमें लिखा हुआ है उसको आप स्क्रीन पे एज इट इज देख सकते हैं. इफ यू वांट टू नो what exactly the meaning of system out and println is, then system is a class and out is a predefined object and println is a method. Predefined object, out is a predefined object which represents a standard output. ये मॉनिटर को रिप्रेजेंट करता है और println आपका मेथड है and here you have given an argument hello world in double quotes. So जो भी आप आर्गूमेंट इसके अंदर देंगे वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे. फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लीजिए. नीचे आपको एक मैसेज आएगा नो सिंटैक्स एरर. उसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं. नाउ दिस क्लास इज कंपाइल्ड. अब आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ से आप रन कर सकते हैं और जैसे ही रन करेंगे यू कैन सी दिस इज द आउटपुट. ये आपका आउटपुट आ गया. यहाँ से आउटपुट विंडो को बंद करिए. दोबारा से प्रोग्राम को ओपन करके कुछ एक और लाइन आपको इसमें लिखना चाहते हैं तो इसको डबल क्लिक करिए और यहाँ पे आके एंटर प्रेस करके यू हैव रिटन system dot out dot println. This is again a statement, output statement, and then here read see you again. So now two lines will be displayed in the program output. First one is hello world and the next line is see you again. Again compile it. When there is no syntax error, close it and then right click it and run the main method. Here is the output hello world, see you again. So this is the way you can type, execute, compile and execute your program in BlueJ. So this is all about today's session. In the next session we will discuss introduction to Java tokens, including keywords, identifiers and literals, and this is a very important topic. Java token is very important. So we will meet you in the next session. Till that, take care.